Hey guys, welcome back to my channel. I am Shreyashi. So if you're new here, I make videos around fashion, lifestyle and travel. वैसे मेरे दिन में ज़्यादा कुछ खास तो होता नहीं है. I usually just go to office, come back home, edit my videos, upload some content, read some books maybe, watch some TV and that's it. I go back to sleep. So this is one of the days in my life where I had an effective storytelling workshop going on. So that is why you can see me presenting in front of everyone. It went pretty well though. Then I came back home and मैंने आते ही कपड़े धोने को डाले because pending था कुछ टाइम से and धोना था. So yeah, that's the first thing I did after I came back home and yup. Good morning guys. So I just got ready and I am leaving for office in another 5 minutes. So yeah. उस दिन घर आकर पता नहीं क्यों बट समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा था तो समोसे ऑर्डर किए घर आते ही एंड खाया. इट वॉजंट दैट गुड दो बट ठीक है फिर भी एटलीस्ट क्रेविंग तो सेटिस्फाई हो गई. बस फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट डे अगेन आई वेंट टू ऑफिस एज यूजुअल and then some posing in the washroom as usual and then walks after lunch as usual. It was a very usual and basic day. That's my desk, a bit messed up but that's what it is. मैंने फाइनली हिम्मत करके एक शॉट ले ही लिया ऑफिस का. दिस इज़ मी व्हेन आई केम बैक होम. हाय देयर. सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम ऑफिस. अभी हो रहे हैं शाम के 6:30 बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली and I just sat down to edit one of the reels and yeah, so ये मुझे अभी upload करना है. So I was quickly editing it and yeah, so that's the quick update. It's Friday finally, 2 days का weekend मिलेगा मुझे. Very happy about it. Yeah, cheers. I'll see you later. Oh my god, Mr. Shukla serving us some delicious noodles. We made noodles again because थोड़ा सामान बच गया था उसका. एंड अब आज हमने बनवाया वीट नूडल्स. उस दिन हमारा मैदा वाला नूडल्स था बट आज होल वीट नूडल्स है. सो लेट्स सी हाउ इट इज़. सो हमने घर के लिए एक छोटा सा टेम्पल मंगवाया है. सो अभी तक टेम्पल नहीं था अनफॉर्चुनेटली एंड मेरा बहुत मन था कि एक कॉर्नर हो जहाँ पे भगवान की चीज़ें डालें. तो एक ज़्यादा बड़ा तो नहीं बट बहुत छोटा सा हमने मंगवाया है. एंड सो इट हैज़ कम and we are going to unbox it now. Yay! बड़ा है जितना मैंने सोचा था उससे बड़ा है. वाओ, so nice. This is actually nice. हाँ एकदम. ओह अगरबत्ती भी दिया है. अच्छा सब निकाल सकते हो तो ऐसे. हाँ. सो हमने ये मंगवाया पेपर फ्राई से. पेपर फ्राई से आई थिंक मेरी फर्स्ट शॉपिंग है बट वेरी सेटिस्फाइड. मैंने सोचा था बहुत छोटा सा कुछ टेम्पल आएगा बट ये बहुत बड़ा और मतलब एक्चुअली प्रॉपर साइज़ का आया है एंड रियली हैप्पी विद द परचेज. हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर का सेटअप हो गया है यहाँ पे एंड ज़्यादा नहीं रखा मैंने, थोड़ा सा रखा है. एंड आई जस्ट वांट टू हैव अ प्लेस वेयर यू नो आई कैन हैव भगवान जीज. सो ये है मेरा क्यूट स्पेस. यप, वेरी हैप्पी. फाइनली हो गया सेटअप. या हाय गाइज. सो वी आर गोइंग टू IKEA एंड कुछ थोड़ा बहुत फर्नीचर देखना है एंड जस्ट फॉर विंडो शॉपिंग एंड अगर कुछ अच्छा लगा तो वी माइट बाई. सो वी आर हेडिंग टू IKEA राइट नाउ एंड या.
सो दैट्स माई OOTD फॉर द डे। काफ़ी ठंड हो रही थी बॉम्बे में, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू वेयर। एंड हमने थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए लोकल लिया उस दिन, एंड सैटरडे था, so ज़्यादा भीड़ नहीं था, एंड दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू टेक लोकल। इट वॉज़ अ फन राइड। एंड देन वी रीच्ड आइकिया। सो आइकिया के हम नवी मुंबई वाले सेंटर पे गए थे, ऑल्दो बॉम्बे में 3 आइकियाज़ हैं, एंड हम तीनों में जा चुके हैं अभी। दिस वॉज अ सेकेंड टाइम टू आइकिया नवी मुंबई। थोड़ा दूर है, बट दिस इज़ द बिगेस्ट सेंटर एंड बिगेस्ट स्टोर, एंड यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, सो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू विज़िट हियर। थोड़ा पेन है जाने में, लाइक नॉट मच, बट थोड़ा सा दूर है, बट इट्स स्टिल वर्थ इट। हमने थोड़ा टाइम पास किया एंड घूमे फिरे, एंड इट्स अ फुल लाइक पूरा दिन का आपका टाइम अच्छा बीत जाता है, लाइक इफ़ यू विज़िट टू आइकिया, इफ़ यू विज़िट आइकिया। वी आर गोइंग इन सर्च ऑफ फूड। भूख लग गई है घूम घूम के। इनका फूड कोर्ट एरिया बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली सिस्टम ऐसा है कि यू टेक योर ट्रॉली, एंड आप काउंटर्स में से जो भी आपको उठाना है उठा के अपने ट्रॉली पे डालते जाओ, एंड एट द एंड आपकी बिलिंग होगी जितनी चीज़ें आपने उठाई हैं उसके हिसाब से। इट वॉज क्वाइट अ कूल कॉन्सेप्ट, एंड मुझे अच्छा लगा। एंड या सो बीच बीच में हम कुछ चीज़ें उठा के वापस भी रख रहे थे जो हमें लग रहा था कि नहीं ज़्यादा उठा लिया है, बट एवरीथिंग वॉज गुड। एंड या वी हैड, एज यू कैन सी, वी हैड अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड कोल्ड एंड हॉट बेवरेजेस भी अवेलेबल थे। एंड कोल्ड बेवरेजेस एंड हॉट बेवरेजेस आप जितने भी टाइम्स चाहे रिफ़िल कर सकते हैं इन अ वेरी नॉमिनल अमाउंट लाइक $80। सो या द एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड ओवरऑल।